अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। वेलकम वेलकम हार्टी वेलकम, वेलकम वेलकम हार्टी वेलकम। Om Shanti. Om Shanti from UK. Welcome to Vadodara family. We are welcoming you. सविता बहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Om Shanti. So Om Shanti Savita. Om Shanti, sister. We met in UK, remember? Oh, sorry? We met there in the UK. Oh, really? Yeah. Where? Did we where? I have been to Loughborough. Oh, have you? Yes, oh my yes. gosh. Okay. So my introduction is, my name is Natalie and I've been with Baba 26 years and currently I run a small centre in Loughborough near the big Leicester Centre. तो ये इनका नाम नटेली है और ये 26 ईयर से बाबा के साथ है और लेस्टर जो सिटी है यूके में, उसके पास एक लफबरो करके स्थान है, वहाँ पर एक छोटा सा सेंटर सिस्टर संभालती है। So I'm going to share how I came to Baba. I think that was asked of me. I'll share that and then let's see how we go. So many years ago, I was definitely searching. I was looking for something. तो ये बाबा के पास कैसे आए, इनको बाबा का ज्ञान कैसे मिला, इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो कुछ साल पहले जैसे कुछ ढूंढ रहे थे, जैसे कोई परमात्मा के लिए ढूंढते हैं, कोई आध्यात्मिकता को ढूंढते हैं, तो सिस्टर भी कुछ ढूंढ रही थी। So being brought up in the West and we are accustomed to all the things that Baba tells us not to do. I live my life like that, drinking alcohol, parties, enjoying that worldly life because I didn't know any different, including eating meat. I didn't know any different. तो बचपन से जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में कैसे लोग होते हैं ना, वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन वो लोग होते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनका लाइफस्टाइल ही जैसे कम्प्लीटली अलग होता है और वो जो लाइफस्टाइल है उनको नेचुरल लगता है, वही लाइफस्टाइल से जैसे उनका जन्म होता है वही लाइफस्टाइल में वो लोग बड़े होते हैं, तो उस लाइफस्टाइल इनका भी था। I wouldn't say I was a bad person as such. I did believe in not hurting people and doing the right thing, but you get sucked into the materialistic way of life where you don't know any different. तो ऐसे नहीं कह सकते कि बचपन से नॉन वेज खाना या शराब पीना उस दुनिया में गलत माना जाता है, वो भी नहीं है, लेकिन ऐसी एक दुनिया में जैसे सिस्टर कहती है मैं खुद फंस गई थी, उस माया की जो दुनिया है वहाँ पर मैं अटकी हुई थी। So I went to church as a child, but I wasn't very much interested in it. But later on in life, I thought I need something more. Something was lacking in my life. I didn't understand what, but I felt something was lacking. तो ये बचपन में जैसे चर्च वगैरह जाया करते थे, लेकिन सब कुछ करते हुए भी इनको जैसे अंदर एक फीलिंग था कि कुछ तो लाइफ में मिसिंग है, कुछ तो कमी है, कोई चीज की तो कमी है। I wouldn't say I was looking for God as such. I would say more looking for truth. Because when I went back to the church, I went as a child, and then when I went back on my search, I went back to church and I found that these great people that would speak amazing things inside the church, but when they came out, they did different things that I found it quite hypocritical actually. तो एक्चुअली जो मिसिंग था वो तो इनको लग रहा था कि मैं सच्चाई को मिस कर रही हूँ, सच्चाई को मैं ढूंढ रही हूँ। तो चर्च में जब जाते थे तो इनको अच्छा तो लगता था चर्च के अंदर जो बातें सुनाते हैं, लेकिन चर्च से जैसे ही बाहर आते थे इनको जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं उनमें समानता नहीं दिखाई दे रही थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था। I even went on my A-levels. One of my A-levels was religious studies. I thought I would study and understand more, but one part of it was looking at the Bible. When I started to see all the discrepancies in the Bible, it really started to put me off religion.
तो ये रिलीजियस जो धर्म है उसके बारे में इन्होंने पढ़ाई भी, स्टडी भी किया है। तो लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी जो लिखी है बाइबल में, इनको माना ये इनका दिल मानता नहीं था कि ये बातें सही है। And so I thought I was discontent. So I thought maybe it's the country I live in. And so I started traveling. I traveled. I went to different countries. तो सब कुछ चर्च में गए, बाइबल पढ़ा, लेकिन अंदर में वो संतुष्टता नहीं मिली, डिसकंटेंट जो बोलते हैं ना, माना जो इनको चाहिए था वो मिला नहीं। इसलिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग देशों में ट्रैवलिंग करना भी शुरू किया। And then I also tried different jobs. I started off in the finance in the city, had a very good job, good money, good lifestyle, everything. Then I didn't like that. I moved to TV. I went into television, got a very good job in television in the West End of London. Didn't like that. तो इन्होंने फिर क्या किया, जॉब करना शुरू किया। फिनेंशियल एरिया में इनको जॉब मिला, अच्छी जॉब थी, अच्छी लाइफस्टाइल थी। फिर इन्होंने वेस्ट एंड ऑफ लंदन में एक टीवी में भी इन्होंने काम करना शुरू किया। मतलब अलग 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 चीज़ें जैसे करते रहे ताकि इनको कहाँ न कहाँ वो संतुष्टता मिले। I remember when I was traveling through America and I arrived in the Bahamas, beautiful. Blue sea, white sand. I had enough money to keep me going for a long time. I had no pressures. I was free, so-called free to do whatever I wanted. But I remember I'd always dreamt I wanted to be at this place. And when I arrived there, it was like, so what? It still didn't satisfy me. There was still something missing. तो ये अमेरिका में भी गए। हम हमेशा सोचते हैं ना, मुझे ये करना चाहिए, वो करने से खुशी मिलेगी, ये करने से संतुष्टता मिलेगी। तो सिस्टर भी हमेशा यही चाहती थी कि शायद मुझे वहाँ जाने से खुशी मिलेगी, वहाँ जाने से मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लगता था कुछ और मिसिंग है, कुछ जो है वो अभी तक मुझे मिला नहीं है। So one country, I ended up in Spain. I was traveling in Spain and I ended up staying there and getting a job there. I did very well and had a very good lifestyle. I was next to the Valderrama golf course, the beach one side, swimming pool the other. And still, I wasn't content. तो फिर स्पेन में गए। स्पेन में भी जॉब अच्छी मिली इनको, अच्छी लाइफस्टाइल थी, जैसे घरों में जैसे स्विमिंग पूल होता है, सारी फैसिलिटीज़ होते हैं। तो ऐसा इनको लाइफस्टाइल मिलने के बाद भी इनको लगा कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। And it was interesting there, you know, I used to sometimes wish it would rain so that I could stay indoors. I used to think the rain was the problem. I was unhappy, you know, the weather of England. But when I was in Spain with the beautiful weather, sometimes it was so hot, there was a pressure to go on the beach. So I wished it would rain and I could just stay in. All going on in the mind. माना जैसे भी कभी कभी बहुत गर्मी हो जाती है तो इनको लगता था कि बारिश होनी चाहिए, या मैं बीच पे चली जाऊँ, समुद्र किनारे चली जाऊँ, वहाँ शायद मुझे अच्छा लगे, वहाँ शायद मुझे खुशी मिले। माना अलग 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 चीज़ें करते रहे, अलग अलग चीज़ों में वो संतुष्टता और खुशी वो ढूंढती रही। And so I used to have many guests. People, when you live abroad, you have many guests. One of my best friends came and she said, I'm going to India in December. And somehow I just thought, I want to go to India. तो जैसे जब भी फॉरेन में जाते हैं तो विजिटर्स भी बहुत, गेस्ट भी बहुत आते हैं घूमने फिरने के लिए। तो इनकी एक फ्रेंड थी, वो भी इनके पास पहुंची और उन्होंने कहा मैं दिसंबर मास में इंडिया जा रही हूँ करके इन्होंने फ्रेंड ने इनसे कहा। And so I actually stopped that lifestyle and that job and I went to India and travelled for a month with my friend and we had a wonderful time. तो फिर फ्रेंड के साथ इंडिया में पहुंच गए और इंडिया में लगभग 1 महीने तक सब जगहों में इधर उधर घूमते रहे। बहुत अच्छा लगा। I'd never seen such poverty, but you know that didn't bother me. My heart just felt, and you've heard this most probably many times, I felt I'd come home. Yeah, I'd never seen a country like it in my life, but the heart was saying I've come home. इनको भारत में जैसे पहुंचे, भारत में बहुत सारा गरीबी भी इन्होंने देखा, ऐसी जगह इन्होंने लाइफ में कभी नहीं देखा था, भारत जैसी जो जगह है। लेकिन इनको ऐसा फील हुआ कि मैं अपने घर में पहुंच गई। But see, my perception that he was thin and old, he had no strength.
तो जैसे इन्होंने इंडिया में ये भी देखा, इन्होंने बहुत सारा शॉपिंग भी किया, तो जब रिक्शा वाला होता है ना, रिक्शा वाला ने इनको जैसे लेकर जा रहा था, तो लेकिन इन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है, आप इतना एजेड है, आपका इतना उम्र हो गया है, आप कैसे रिक्शा चलाओगे, ये तो अच्छी बात, इनको अच्छा नहीं लगा कि इतना बुजुर्ग सा, इतना एजेड व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, अभी भी काम कर रहा है। So when he took us to our destination, I saw it was so easy for him to cycle with all our luggage. And because we were on holiday, I saw what he had to eat. I was hanging around. He had 2 small chapatis and a little bit of vegetable. I was amazed at the little amount he had. तो ये जो रिक्शा वाला जिनके साथ ये जा रहे थे, उस रिक्शा वाले को देख के इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतना सारा लगेज वो ले जा रहा था रिक्शा वाला, और उसके पास केवल 2 रोटी थी, थोड़ी सी सब्जी थी, वही वो खा रहा था। ये सब देखकर इनको बहुत मन अजीब सा लगा, थोड़ा सरप्राइजिंग भी लगा कि ये क्या क्या है ये। It started to challenge something inside of myself, because very strong beliefs that to be strong, you eat lots. This is the Western approach. And also, if you're aged, you know, you haven't got any strength, you can't do anything. And this challenged my thoughts, and I was really so inspired, and it triggered something in me. तो जैसे इनको मना, जब इन्होंने देखा भारत का हालत, देखा भारत का कंडीशन देखा, और माना इनको अंदर कुछ तो वो ट्रिगर हुआ कि ये जो हो रहा है ठीक नहीं, कुछ तो मैं लाइफ में मिस कर रही हूँ करके इनको लगने लगा। So what I saw was that I noticed that India had something the West didn't have, and that's spirituality. We didn't have it. We may have many things, but we lack something. And I saw people genuinely happy there. I saw people with very little, but very accepting and working with what they had. So they had spirituality, which the West totally didn't have. तो माना इनको जैसे भारत में आकर के एक अलग सा अनुभव हुआ कि यहाँ पर लोग थोड़ा बहुत होने के बाद भी कितना खुश रहते हैं, कितना वो अच्छा जैसे फील करते हैं। तो जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, अलग अलग चीज़ें इन्होंने इंडिया में देखा, इनको ये महसूस हुआ कि ये सारी जो चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है हमारे। Someone's raised their hand, Savita. Vijay's raised his hand. किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं, किसी ने हाथ उठाया? Vijay. Vijay. Oh, sister. No, you can continue. Okay. Yeah. So while I was traveling with my friend, she started to tell me about Brahma Kumaris and the Raj Yoga meditation course. She started sharing this knowledge with me. तो इनके फ्रेंड्स के, so she knew about Brahma Kumaris before only. Yes, yeah. तो ये जब फ्रेंड के साथ इंडिया में ट्रैवल कर रही थी, तो फ्रेंड ने इनको ब्रह्मा कुमारीज के बारे में बताया। And so I really liked what she was saying, and I really liked India, and I found out that this knowledge originated from India, and so I decided that when I go back I was going to investigate more. तो इनको उन्होंने जो ज्ञान सुनाया ब्रह्मा कुमारीज के बारे में अच्छा लगा, भारत अच्छा लगा, और ये जो ज्ञान है भारत से निकला हुआ है, ये बात भी इनको अच्छी लगी। तो इन्होंने यही सोचा कि मैं भारत से वापस अपने देश जाने के बाद इसके बारे में मैं और ज़्यादा जानूंगी। So anyway, life has its twists and turns. I went back to Spain, then I ended up back in London, and I gave everything up, but I wasn't sure of where I was going to go. Actually, I knew I had to get a job, but my life now, I'd left a very good lifestyle, but kind of came back to my parents, unsure of the next step. तो जैसे स्पेन में जॉब कर रहे थे, फिर वो छोड़ के लंदन वापस आए अपने पेरेंट्स के पास। इनको आगे क्या करना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, इसकी क्लैरिटी इतना नहीं था, लेकिन जैसे ज्ञान मिला, कुछ तो परिवर्तन लगने लगा, तो इन्होंने डिसीजन लिया, जॉब छोड़ दिया और अपने पेरेंट्स के पास लंदन वापस आ गए। I was in a new town, I had a new job,
And as I was working for the council, the social services. It was a small job actually, but I saw an exhibition in the town county hall said learn Raj yoga meditation for free. I didn't have any money at that time, and it said for free, so that attracted me. तो इन्होंने एक एग्जीबिशन भी देखा, उसमें लिखा हुआ था कि राज योगा मेडिटेशन आप फ्री में सीख सकते हैं. वो फ्री वर्ड भी कितना अट्रैक्ट किया, तो इनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि इनके पास पैसे भी नहीं थे, तो इन्होंने बोला चलो ठीक है ट्राई करते हैं. So I went to this house in a street and I started the Raj Yoga course, and I did it day after day after day actually. Instantly I just went to do the course. So where did you do the course? In a place called Chelmsford in Essex. It's UK, Chelmsford, Essex. Brother Steve. ब्रदर स्टीव करके एक भाई ने इनको कोर्स दिया जेम्सफोर्ड करके एक स्थान पर, और इन जैसे ही इन्होंने कोर्स शुरू किया, जैसे कंटिन्यू किया, कभी कभी कोर्स को डिसकंटिन्यू भी करते हैं ना, तो इन्होंने कोर्स कंप्लीट कोर्स बाबा का लिया. So after the course he then said, right, for Murli class you come at 6 in the morning, and he also told me about getting up at 4 in the morning. And you know, my lifestyle was on a Saturday I'd go to bed at 4 in the morning. तो जो स्टीव ब्रदर जिन्होंने, where does he live now? He's a bit further. He's not in Chelmsford. He's in another city now actually. तो जो भाई है जिन्होंने स्टीव भाई, इन्होंने इनको कोर्स कराया, उसने बोला आपको 6 बजे मुरली क्लास में आना पड़ेगा, 4 बजे उठना पड़ेगा, लेकिन इनका लाइफस्टाइल तो जैसे कम्प्लीटली डिफरेंट था, तो 4 बजे तो सोते थे, कभी कभी सैटरडे नाइट जैसे पार्टी वगैरह करते हैं ना, तो वो तो करके, तो इनका सोने का टाइम ही 4 बजे था, तो इनको थोड़ा अजीब सा तो लगा. So to be honest with you, I didn't really understand Murli. I don't think I'd really understood Baba, but you know what? It penetrated my heart. Baba penetrated my heart. My heart knew. My head, well, it was all full of body consciousness anyway, but my heart knew. So I started going to the centre at 6 o'clock every morning. तो ये सवेरे 6 बजे सेंटर जाना शुरू किया. इनको बाबा मुरली इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन इनको बाबा ने इनके दिल में जैसे प्रवेश कर लिया था, तो भावना, वो प्यार, वो अनुभव थोड़ा थोड़ा हो रहा था, इसलिए इन्होंने 6 बजे मुरली में जाना शुरू कर दिया मॉर्निंग. So I'd go to Murli class, then go straight to work after that, and then I'd go back to the centre at night and help in any way. I'd do anything to help. Every night I'd be back at the centre helping. तो मॉर्निंग 6 बजे मुरली में जाते थे, फिर लौकिक जॉब करते थे, फिर वापस आने के बाद सेंटर पर आकर के जो भी सेंटर की सेवाएं हैं उसमें भी मदद करते थे. You know, I'd sit in Murli class and I'd be asleep actually. And then I didn't really understand, but I knew that this was right. I'm a person that really, I'm very careful in my decision makings. I'm quite sensible, but this spoke to me that this is the right thing to do. Although my head didn't understand, I went with it. And soon after a few weeks, I was at the centre at 4 every morning on the door for Amrit Vela as well. I'd drive in my car to Amrit Vela as well. तो जैसे मॉर्निंग 4 o'clock भी ये सेंटर में कभी जाते थे, फिर 6 o'clock कभी नींद भी आता था, लेकिन इन्होंने वो जो भाई ने कहा ना कि करना है, तो क्योंकि बाबा फिर शुरू में कराता भी है, तो फिर ये जो लाइफ है इन्होंने बाबा के साथ की वो जर्नी है, वहीं से इनका जो है वो शुरुआत हो गया. And then my whole life turned around. I stopped all the things that I used to do, turned it all around to the shock of I had a lot of friends actually. I had many friends all over the world actually. I love traveling. My whole life shifted and changed to going to work and then to the centre. It was the work, it was either I was only in my flat to sleep, otherwise the centre and going to work. And my whole life I adopted everything immediately, all Baba's codes of conduct immediately. तो जैसे ही बाबा के ज्ञान में आए, इन्होंने सारी मर्यादाएं भी तुरंत फॉलो करना शुरू किया, धारणाओं पर भी चलना शुरू कर दिया, सारा इनका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया. तो इनके जो फ्रेंड्स थे उनको बहुत शौक लगा कि इनको क्या हो गया. तो my family actually, I remember the first Christmas with my family, and when I refused to have an alcoholic drink, they would laugh at me, they
prodded me. They said, they gave me quite a hard time actually. But as I saw them and their words slurred, and then and saw the effect of alcohol, and I knew I was doing the right thing, but I had to face from my family actually, because I'd been very outgoing person, very extrovert, but I knew this was the right thing. So they couldn't change me, but they tried hard to make me shake, definitely. तो इनके जैसे वेस्टर्न कल्चर में होता है, ये परिवार वाले सब साथ में बैठ के शराब वगैरह पीते हैं, तो परिवार वाले तो पीते ही थे, फिर इन्होंने बंद कर दिया। तो फैमिली वाले इनको डांटना शुरू किया कि आपको क्या हो गया है, आपका लाइफस्टाइल क्यों चेंज हो गया है। तो जो परिवार में जब विरोध आता है, ज्ञान में जब चलते हैं, तो सब इनको फेस करना पड़ा। I made sure I was involved in service. I think this was Baba's way of protecting me. So I would be serving at the centre for whatever I could do, I would do. And I think that's a protection from being pulled by Maya back to the world outside. तो वही तो बाबा की भी युक्ति है, मेरा भी वो पर्सनल एक्सपीरियंस भी वही है कि शुरू में बाबा सेवा में जब इन्वॉल्व करता है हमको, तो बाहर की जो माया है, बाहर का जो अपोजिशन है, बाहर का जो अट्रैक्शन है, क्योंकि शुरू में ज्ञान इतना समझ में नहीं आता है, बाबा को भी हम इतना समझते नहीं, लेकिन सेवाएं करते 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 बाबा के भी नज़दीक हो जाते हैं। तो इन्होंने भी वही काम किया कि सेवा में हमें अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू किया, तो माया का जो अट्रैक्शन है उससे धीरे 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 इनको दूर होना सहज हुआ। There's quite a challenge because at this centre there were 3 brothers and me. So I learned quick. Baba quick helped me to break my ego, because I can share many examples of. I'll share one example in a minute. तो ये सेंटर पर 3 भाई और एक ही बहन, ये भी फिर एक चैलेंजिंग की बात हो जाती है, तो भी फिर उसमें से भी 1-2 बातें शेयर करेंगे। So one example, because in those days we did everything ourselves, yeah? And they decided to extend the house and build an extension themselves. They decided when it was winter time, and of course I would be involved, and I found myself in winter knee-high in foundation and mud and cold and dirt, and helping them, and also making tea in that cold. And I used to think, what am I doing here? what a life I had before, a very nice lifestyle, suddenly all of this going on, a challenge. But always at the back of my mind, I knew this is godly training. I knew it was godly training. तो इस सेंटर पे जैसे ही इन्वॉल्व होना शुरू किया, सेंटर का रिनोवेशन, उन्होंने सेंटर की कुछ काम, कंस्ट्रक्शन का काम करना चालू हो गया, तो इतनी ठंडी में इतना डस्ट है, धूल है, मिट्टी है, सिस्टर सोचने लगी मैं कहाँ पहुँच गई, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, मेरा इतना अच्छा जीवन था, इतना अच्छा लाइफस्टाइल था, मैं कर क्या रही हूँ। लेकिन इनको कहाँ न कहाँ बैक ऑफ द माइंड पर ये मालूम था कि परमात्मा की ट्रेनिंग मुझे मिल रही है करके। And of course, they soon had me in the kitchen cooking food and making borg on a Thursday. And sometimes, because in my whole lifestyle, and so I'm making borg, and sometimes it didn't always turn out right because so early, I never cooked at 5 in the morning, ever. And so, what I used to watch, the magic of Baba, if something didn't turn out, when Steve would come to look at it, somehow with a bit of jiggling, it turned into something magical, and it could only be Baba's magic that borg was good enough to offer and then for everyone to eat. तो इनको सवेरे 5 बजे भोग बनाने की भी ड्यूटी मिली, तो इनको तो कभी इन्होंने ऐसे खाना बनाया ही नहीं, फिर भी कोशिश कर रहे थे, तो कुछ बनाना कुछ और जाते थे, बन कुछ और जाता था, तो फिर कुछ और वो नई रेसिपी बन जाती थी, तो ब्रदर स्टीव भी आकर के देखता था कि कैसे बाबा की मदद से कुछ नई रेसिपी जैसे बन गई। I also saw, on the other hand, I was still working full time. I never wanted to give up work because I knew spirituality for me means living in the world and bringing spirituality into the world. It doesn't mean coming away from the world. So I always wanted to work, but some magical things happened in my job also. तो ये कभी भी अपना लौकिक जॉब छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी माना अपना जो नॉर्मल लाइफ है उसमें स्पिरिचुअलिटी को लाना है, तो ये चाहते थे कि जॉब भी करे और अपना बाबा की सेवाएं भी करे, इन्होंने जॉब को छोड़ा नहीं।
I was called in one day and got a massive pay rise without even knowing. Then I went and got a promotion without even asking for it. Then I got offered a company car and a mobile. This is, many years ago. We're talking over 30, many years ago. Didn't ask for it. So I was watching all the magic of drama. When I focus on myself and work on myself, then the things around you start to happen for your benefit. तो ये जब जॉब कर रहे थे तो वहाँ पर इनको प्रमोशन भी मिला, इनको एक मोबाइल फ़ोन भी मिला। उन दिनों एक मोबाइल फ़ोन मिलना माना बहुत बड़ी चीज़ थी। तो जैसे ड्रामा पे सब कुछ छोड़ के इन्होंने हॉनेस्टी से सब करते गए, तो कैसे कैसे इनको मदद मिली, हर प्रकार से वो अनुभव करते रहे। I was in a center where we were very interested in Morley and meditation. So we would have very many experiments with meditation, and we'd also study and discuss the Morley. So in time, after a few years, I really got to understand the Morley and have great love and value for the Morley and the importance of meditation and yoga. So in time, that definitely become so important to me. तो जैसे धीरे धीरे ज्ञान में चलने लगे, मुरलियों के बहुत ज़्यादा गहराई में जाने लगे, मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है ये भी समझ में आने लगा। तो हर बात की जैसे धीरे 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 गहराई में जाने लगे। Then Steve used to go on service to prisons actually, and I used to take half a day off work, and because they needed a sister as well, it was a long drive, and we did service in maybe 2 or 3 prisons in an afternoon. I'd take half a day off work and go with him, and we'd do positive thinking and meditation in a men's open, a young offenders unit, and another prison. तो ये जेल में भी जाकर के जो ब्रदर है ना स्टीव, उनके साथ जेल में भी जाकर के सेवाएं करने लगे। फिर ये अपने जॉब से आधे दिन की छुट्टी भी लेकर के जाते थे जेल में सेवा करने के लिए, जैसे वहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह कोर्स भी कराते थे जेल में। If we would go once a week on a Monday, and the prison officers, they didn't really want us there because they saw we were helping the inmates. They would forget that we would come in, they would not let us in, they'd try and make excuses. We had many challenges, but we always got in, but we faced a lot of opposition from the staff there. Why they didn't? Why? What was the reason why they didn't? Because really they saw us as, when the mentality of some people, you're in prison, you deserve to be, what right have you got to have any other resources? So we would go in there really offering to help them and support them, and there was resistance even from the staff. Goes on. Yeah, goes on. तो जब जेल में सेवा करने के लिए जाते थे तो वहाँ के लोग इनको सहयोग नहीं देते थे, वो नहीं चाहते थे कि ये लोग वहाँ पर जाए सेवा करें। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, लेकिन इन्होंने अपना कोशिश नहीं छोड़ा और जेल में जाकर के सेवाएं करते रहे। One day I went to my manager in my job and I said, can I take unpaid leave? Means, can I leave early on a Monday and then you don't pay me? And she said, why? What's it for, Natalie? And it's the first time I told her that I'd been going regularly to a few prisons and we're serving and giving positivity in the prison. And she was a very strict manager, but very fair. And she said, you carry on going and we're not going to deduct your salary. So I continued for a few years getting paid for that time. That's not common in this country, actually, not common. तो जहाँ पर ये जॉब करती थी उनकी जो मैनेजर थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन ये मंडे के दिन, हर सोमवार के दिन जेल में जाते थे सेवा करने के लिए। इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मंडे के दिन मुझे छुट्टी दिया करो ताकि मैं जेल में जाके सेवा करूं। लेकिन ये तो ऐसे देशों में होता नहीं कि आप जॉब पे ना जाओ और आपको सैलरी भी मिले। ये छुट्टी लेकर के जेल में सेवा करने के लिए जाते थे, लेकिन मैनेजर इनकी सैलरी कट नहीं करती थी। छुट्टी लेने के बाद भी इनको उस दिन की सैलरी भी मिलती थी। Baba's work, Baba's magic. One day they used to hold retreats at Oxford Retreat Centre for prison service. And we used to go to prison, but we never knew kind of the outcome of what was happening. One day I met Maureen and she said, oh, we've got a retreat happening this weekend. We didn't really know, actually, me and Steve. And there was about 10 staff coming from the prison that we used to go to. We didn't even know. So
the wonder of incognito service for Baba. We don't want anything back. We carry on going, but you never know the fruit of what's going to come out, actually. So that was the benefit. तो जो रिट्रीट है ऑक्सफोर्ड में, बाबा का रिट्रीट सेंटर है, वहाँ पर ऑलरेडी वो जेल के जो स्टाफ थे ना, वो ऑलरेडी वहाँ पर जाते थे बाबा का ज्ञान लेने के लिए। तो इनको मालूम नहीं था कि ये लोग वहाँ जा रहे हैं। तो जैसे गुप्त में ये लोग अपनी सेवाएं करते रहे, जेल की सेवा, लेकिन वो लोग वहाँ रिट्रीट सेंटर बाबा के घर तक पहुँच भी गए थे। तो ये सब देख करके इनको बहुत वंडर लगा। So soon after that, I left that centre and went to Ilford Centre. I don't know if any of you know Manju Ben and Satish Bai from Ilford Centre. Does anybody would know them? They're very old in knowledge. Anybody know them? Maybe not. I know. Yeah. So I moved to that centre and I stayed there for about 9 years and had Shiv Shakti training. Who gave the training? Sorry? Who gave the training? Shiv Shakti training. Who gave the training? The brother and sister that lived there. It was like Madhuban. It was run like Madhuban style. Okay. Strong. What I'm saying is strong, strong training, which was good. It was there to break my ego. More training to break my ego. तो इल्फर्ड सेंटर है, वहाँ पर इन्होंने 9 साल वहाँ पर रहे। वहाँ पर एक सिस्टर मंजू है और वो लोग सेंटर चलाते थे। वहाँ पर रहने के बाद इनको जो पक्का वाला शिव शक्ति वाला जो ट्रेनिंग है ना, वो मिला ना, एकदम वो स्ट्रॉन्ग होना, कैसे होना है, मधुबन का सिस्टम जैसे वहाँ पर वो लोग फॉलो करते थे। I remember my first day there. I arrived for breakfast and they gave me paratha and sabji for breakfast. With thick paratha in oil and sabji, and I'm used to toast or cereal. तो इनको इल्फर्ड सेंटर में सवेरे सवेरे बहुत अच्छे खासे परोटा सब्जी मिला नाश्ते में, लेकिन इनको तो ब्रेड और सीरियल्स और ओट्स वगैरह खाते हैं लोग, ये खाने की आदत होती है, तो लेकिन इनको परोटा और सब्जी मिला। I even get bread in Madhuban, but here, so I just say, Baba's teaching me to be free from taste. Anything you're accustomed to, you've got to break all these sanskars and habits. So I have to break it. So fine, Haji. मधुबन में भी फिर भी ब्रेड मिलता है, लेकिन इल्फर्ड सेंटर में ब्रेड नहीं मिला इनको तो। लेकिन बाबा हर चीज ऐसे सिखाता है ना कि हम अपने टेस्ट जो है, कर्मेंद्रियों का जो आकर्षण है, उससे भी हम दूर रहे, जो मिलता है प्यार से खाए। यही तो शिव शक्ति की ट्रेनिंग इन्होंने नाम दिया ना, तो ट्रेनिंग इनको वहां पर मिलता गया। But I soon realized that actually, because I didn't take anything for lunch, those 2 parathas and sabji kept me going all day long. So when I got home at 5 o'clock, I was ready. I was, that food filled my stomach and kept me going till the evening. तो जो पराठा सब्जी सवेरे सवेरे खाते थे, इनको वो सारा दिन चलाता था वही भोजन, शाम तक फिर भोजन की भी जरूरत नहीं होती थी। Because that was my breakfast every day. तो फिर करते करते वही परोठा और सब्जी इनका एवरीडे का नाश्ता हो गया। But we did a lot of service there. We did a lot of service, and Daddy, this couple, Manju and Satish Bai, were one of 4 couples that helped Daddy when Daddy first come to London. तो ये मंजू बहन और सतीश भाई जो है इल्फर्ड सेंटर के 4-5 कपल थे शुरू में, जिन्होंने दादी को मदद किया, जानकी दादी जब लंदन गए। तो उन कपल में ये भी एक कपल है, सतीश भाई और मंजू बहन। So Daddy Janki had a lot of love for them. तो दादी का भी उस कपल के साथ बहुत ज्यादा प्यार रहा है, तो इन्होंने, सिस्टर ने भी उन दोनों के साथ मिलकर के बहुत सारी सेवाएं किया। Also because, as Daddy said, this highest karma, there's good karma, but the highest karma is you help in a time of need. And whenever Daddy wanted money or wanted them to go there by train or to do anything, they were ever ready. So Daddy remembers that because they helped in the early days when there was none of us were around then. तो शुरू में तो बहुत सारे कम थे बाबा के बच्चे, और शुरू में से सहयोग की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तो जब बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है तब सेवा करने से ज्यादा ही हमारा भाग्य बनता है। तो शुरू में जब कोई नहीं थे उस समय सतीश भाई और मंजू बहन जो कपल थे, उन्होंने दादी को बहुत सहयोग दिया। So Daddy used to come regularly. She used to stay,
And we all know Daddy Yankee anyway, so what a great soul. But good to be in that company, in that environment, and I could learn so much. I could learn so much being around her. तो दादी भी बहुत बार इनके पास जाती थी, रुकती थी, चक्कर लगाती थी, तो दादी के साथ इनका बहुत ज्यादा रहना हुआ, बहुत ज्यादा इनको सीखने को भी मिला. So I learned many things, and again I think my ego was broken even more. How to peel potatoes. I remember once being, this is how you peel a potato. And I remember, you know, I come from a family, a very independent family, so we were peeling potatoes when we were very young, and suddenly to be told this is not how you do it, and this is how we do it Brahmin style. And again, I didn't say anything, but in my head I was like, oh, don't tell me, who do you? But I knew that that was breaking my ego. And again, the thought, Baba's training me. So how to peel a potato, how to cut a vegetable, how to do everything Brahmin style. So I had to relearn all the things I'd learned over the last 30 odd years of my life. तो जैसे हम घर में हम काम करते हैं, आलू छीलना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेंटर में आने के बाद हमको दूसरी ट्रेनिंग मिलती है, आलू ऐसे नहीं वैसे चलते हैं, सब्जियां ऐसे नहीं वैसे काटना होता है, ये ऐसा नहीं वैसे करना होता है, ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है. हर बात पे ठोकना, हमको ठोकना खाना ही पड़ता है. तो सिस्टर को भी वही अनुभव हुआ. ब्राह्मण स्टाइल, हर एक चीज का ब्राह्मण स्टाइल होता है ना, वो हम सेंटर पर आके सीखते हैं. तो सिस्टर को भी वही 30 से भी ज्यादा 20 साल हो गया है बाबा के साथ. तो इससे बहुत सारी ट्रेनिंग इनको मिलते रहे. There I developed also my love for the Murli. Satish Bhai would have it in Hindi and would translate into English in the English class, automatic. So he'd give the, you know, a real translation and share kind of the different words and what they meant. And he was a great churner. I don't know anybody in the UK who had such depth and feeling of Baba's Gyan. And luckily I spent a lot of time with him in unpicking the Murli and going into the depth of it actually. तो सतीश भाई बहुत मुरली का चिंतन मंथन करते थे, मुरली के गहराई में जाते थे. तो इनको भी उनके साथ रह करके मुरली के गहराई में जाना, मुरली को अच्छे से समझना, संग का रंग बोलते हैं ना, वो भी इनको अच्छा भाग्य मिला. तो what about them now, Satish Bhai and Manju? So yes, Manjuben is still there in Ilford. She's at the centre there. It's still there. Satish Bhai passed away while I was there actually. He left the body actually. He was quite unwell man, so he passed away. Very great soul. Very, very, very great soul. तो सतीश भाई जो है उन्होंने अभी शरीर छोड़ दिया है. उनकी उगल मंजू बहन अभी भी है इल्फर्ड सेंटर पर. You know, because to really have good meditation, I really need to understand myself as a soul, really need to understand the Baba and the depth of his knowledge so that I can really have what quality yoga and also the dana. We have to present ourselves in the world according to what Baba's saying, not that we just talk it, but it really has to be authentic. I'm actually living it, and that's what I learned from Satish Bhai. देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने सुनाया कि जो बाबा का ज्ञान दुनिया को सुनाते हैं और दुनिया के सामने हम अपने को कैसे प्रेजेंट करते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है. तो सतीश भाई ने इनको यही सिखाया कि हम दुनिया के सामने, दुनिया के लोगों के सामने बाबा के ज्ञान के हिसाब से अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे हम अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो वो इनको सीखने को मिला. He really practiced soul consciousness, and I could see it with my own eyes, because sometimes if Daddy Yankee walked through that door, how he greeted her, then I would come home from work about 5:30. I had the same greeting. He didn't treat anybody any differently. I watched this, and this was my inspiration, and it really made clear in me how I want to live my Brahmin life. Not that I put other people in a pedestal or treat them differently. Everyone, however long in Gyan, whoever they are, the soul conscious vision, and to treat everybody with respect, with love and with royalty. I saw that, I was witness to that, and that really inspired me to live like that also. तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात सुनाया कि अगर जानकी दादी सामने गुजरती है तो भी सतीश भाई का व्यवहार वही था, या उनके सामने सिस्टर जाती थी तो भी उनका व्यवहार वही था. ऐसे नहीं कि कोई बड़े जाए तो उनके प्रति ज्यादा रिस्पेक्ट है,
या छोटे के चले जाए तो उनके प्रति कम रिस्पेक्ट है, वो नहीं। हर एक को इक्वल, हर एक को एक ही रिस्पेक्ट, एक ही समान दृष्टि से देखना, ये इन्होंने सतीश भाई से सीखा। देखिए सतीश भाई कौन है हम नहीं जानते हैं, लेकिन कितना कुछ हमको उनसे सीखने को मिल रहा है। It's very important to see in Brahmin life, to see this practically demonstrated. He would make me a cup of tea when I come in, although many, many years, very old in knowledge, but he would make me a cup of tea when I came in from work. सतीश भाई बहुत सीनियर थे, लेकिन फिर भी सिस्टर जब काम से थक के आती थी तो सतीश भाई इनको चाय बना के देते थे। To remember, because we are a family. This is very important for me, that we are a family. क्योंकि कुछ भी है, हम एक परिवार है, वो इम्पोर्टेंट है। To give regard to our seniors, but also to remember that we are all equals here. Sorry, regard to the senior then? And that we are equals because we're a family. तो बड़ों को रेस्पेक्ट तो देना ही है, लेकिन बाबा ने एक परिवार को भी तो बना दिया है, भी है। After there, I moved to Tennyson Road in London, which is where Daddy Janky and Genty Ben first started service. तो इल्फर्ट के बाद टेनिसन रोड का नाम आपने सुना होगा, तो जहाँ पर दादी ने अपनी सेवाएं शुरू की थी। हमने वो स्थान को देखा है, बहुत छोटा सा स्थान है, तो वहाँ पर सिस्टर मूव हुई। And so I was there for a year and a half, and yet I was still working in my Lockheed job. तो वहाँ पर 1.5 साल टेनिसन रोड पर रहे, और वहाँ पर भी इनका लॉकिंग जॉब चल ही रहा था। The vibrations of that Baba's room, I can't tell you. Incredible. I thought about it just now. And Sorry? I thought about it. Baba's room, I remembered it and you mentioned about it. तो वहाँ का जो बाबा का कमरा है टेनिसन रोड का, उसके बारे में मैं भी सोच ही रही थी, और सिस्टर ने उसके बारे में मेंशन किया। बहुत ही अच्छा बाबा का कमरा है, जिसमें दादी ने शुरू के दिनों में तपस्या किया है। वहाँ का जो पावर है, वाइब्रेशंस है, बता नहीं सकते हो क्या चीज है। So I was obviously connected to Global House, so I got myself in many aspects of service, from accounts, in the kitchen, on the reception. I involved myself in many areas so I can learn all about service. तो ग्लोबल हाउस जो है बाबा का सेवा का स्थान, मेन सेंटर, वहाँ पर ये अकाउंट्स में, किचन में, रिसेप्शन में, अलग अलग वहाँ के जो डिपार्टमेंट्स हैं, हर एरिया में इन्होंने अपनी सेवाएं देना शुरू किया। तो इनको धीरे धीरे जैसे बहुत कुछ सीखने को मिला। Still working, because it was important to me to really maintain being in the world and also leading a spiritual life. तो इनको मना अपना लॉकिंग जॉब भी करना था, बाबा की सेवाएं भी करनी थी, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता गया। But I had many chances to be with Daddy and be with the seniors and many guests that used to visit Global House. तो दादी जानकी दादी के साथ रहने का, और जो ग्लोबल हाउस है वहाँ पर बहुत सारे मेहमान जाते रहते हैं, तो सबसे मिलने का, सीखने And many times after a program, a few of us would sneak into Daddy's room, sit on the floor in her little room, and she would share stories, give drishti, give toli, and that happened so many times. तो जैसे कोई भी प्रोग्राम के बाद दादी के पीछे दादी के कमरे में चले जाते थे, नीचे बैठ जाते थे दादी के सामने, तो दादी बहुत सारी पुरानी कहानियां सुनाती थी, टोली देती थी, तो बहुत बार इनको अनुभव हुआ है। So a lot of closeness and a lot of picking up and watching and observing and picking up on the way she handled herself with others. तो जैसे दादी दूसरों के साथ, दादी का क्या व्यवहार रहा, दादी दूसरों को कितना प्यार देती है, दादी दूसरों को कितना रिस्पेक्ट देती है, तो ये देख के बहुत सारी चीजें हम ले सकते हैं ना, तो ये भी इनको चांस मिला। Daddy once said to me that you're a very honest soul. दादी ने इनको वरदान दिया, बहुत ही ईमानदार आत्मा है। So I didn't spend lots of time with her, but she knew me. That's the beauty of Daddy. She knows everybody. I knew she knew me because she knew where I lived at Ilford Centre. She knew me, and I kept incognito. I didn't push myself in the front, but I knew she knew me, and I'm happy because I'm connected to Baba. So not lots of experiences with the daddies. तो दादी को ऐसे नहीं, बहुत दादी के नजदीक रहे, लेकिन दादी सबको जानती है ना कौन क्या है। इल्फर्ड सेंटर में सिस्टर
रह करके सेवाएं किया है, दादी को मालूम था, तो वो कनेक्शन था दादी के साथ। When I was in Tennyson Road, you know Money Ben that lives there? Money Ben. She comes from Loughborough Centre. And as soon as I arrived, she said, would you like to go and live in Loughborough Centre? I said, no, I've just arrived in Tennyson Road. But she kept on and on and on. And then after a year, I needed time. I wanted to learn about London. But then after about a year and a half, I said, okay, Haji. तो सिस्टर मणि है वहाँ पर, मणि बहन का भी शायद आप लोगों ने अनुभव इसमें जरूर से सुना होगा। तो वो सिस्टर मणि ने इनको लफ्बरो सेंटर में जाने के लिए कहा। उन्होंने शुरू में ना किया, उनको टाइम चाहिए था, फिर धीरे धीरे उन्होंने हाँ की और माना कि लफ्बरो में मैं जाऊंगी। लफ्बरो एक जगह का नाम है। हाउ फार इट इज फ्रॉम लेस्टर? 20-minute drive. 20 minutes. लेस्टर जो है वहाँ से 20 मिनट की दूरी पर लफ्बरो है, तो वहाँ पर सिस्टर फिर गई। So I've been here 11 years, but because it's just me living in the centre, no one else, I've given opportunity to do whatever I want for Baba. तो लखपरो सेंटर में सिस्टर अकेले रहने लगी, तो उनको चांस मिला, जो चाहिए करो, जितनी सेवाएं भी चाहिए करो, जितना क्रिएटिविटी करना चाहिए करो, तो उनको अलग वो एक अनुभव मिलने लगा। So we do talks and courses, gone out to all the villages over the years, done public programs, and then served at the university. तो यूनिवर्सिटी में जाना, विलेज में जाना, कोर्सेज देना, क्लासेस कराना, प्रोग्राम कराना, ये एक अलग अनुभव इंडिपेंडेंटली करने का भी इनको मिलता गया। So I've enjoyed being quite free and independent. I didn't have to say Haji anymore. तो लफ्बरो सेंटर में इनको मजा आने लगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है, ऐसे नहीं किसी को हाजी करते रहो सारा दिन, कैसे आलू छीलना है, कैसे सब्जी काटनी है, उसके लिए इनको हाजी 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 नहीं करना है सारा दिन। मजा आने लगा इंडिपेंडेंटली, अपनी सेवाएं करो, अपनी मस्ती में रहो। And there is a class here, but they're mostly, would you believe it, Indians. I'm the centre coordinator, and they're Indians. So Indian, most the students are Indians. Yeah, Gujarati. Yes, we've got a couple of Sikh Gujarati, and they're longer in Gyan than me. and Indian. And we have English souls, a small handful, but we all get on fine. It's not a problem at all. They're very respectful of me. I treat them fair. We're all the family. I don't treat them like the centre in charge. तो ये वहाँ के सेंटर कोऑर्डिनेटर है, लेकिन वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ सारे मेजॉरिटी भारत वाले हैं, कुछ गुजराती से, कुछ सिख लोग हैं, कुछ है इंग्लिश के लोग भी, लेकिन सब परिवार के जैसे सब एंजॉय करते हैं। सिस्टर भी मैं सेंटर इंचार्ज हूँ, ऐसे उनके साथ बिहेव नहीं करती है, तो सब मिलके एंजॉय करते हैं। When sisters and brothers come from India and they say you're the centre in charge, and they see our family, it's unusual for them, but hey, it's good. भारत से जो भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं सेंटर इंचार्ज की दीदी मन अलग ही होते हैं, लेकिन ये भी सेंटर इंचार्ज, लेकिन कितना इजी है, फ्लेक्सिबल है, सबके साथ मिलना जुलना है, देखकर उनको बहुत वंडर लगता है, आप सेंटर इंचार्ज हो, ऐसे क्वेश्चन भी उनके माइंड में आ जाता है। And I cook Indian food. My chapatis aren't that round, but I cook my sabjis and my dal. In fact, this morning I made Karela. तो ये अपना रोटियां खुद बनाती है, इतना राउंड नहीं बनती है रोटी, लेकिन रोटी बन जाती है, सब्जी दाल भी बनाती है, और आज सवेरे इन्होंने करेला की सब्जी बनाई। And now we're working at the university. It's the 6th biggest university out of 130 universities. It's the top 6. It's big. It is big. And I go there once a week, and I've been made a Brahma Kumari's chaplain. Is chaplain? What does that mean? Brahma chaplain means it's begun in Christianity, where you have a chaplain, you help students and staff, a chaplain, you're there to help them, listening ear, like counsellor. It was equated with Christianity, but now it's with all faiths, chaplain. So it's a job? It's an unpaid job, volunteer, but it's a job, but unpaid, yeah. So that university, it's 6th in the UK? Yeah, out of 130. Okay, तो एक वहाँ पर यूनिवर्सिटी है, तो 130 यूनिवर्सिटी में से वो टॉप 6th पोजीशन में है।
तो उस यूनिवर्सिटी में सिस्टर एज ए काउंसलर वहाँ पर जाती है और वहाँ पर उसको चैपलिन वर्ड कहते हैं, वहाँ पर एज ए काउंसलर वहाँ पर जा करके अपनी सेवाएं देती है, वॉलंटियर्स सर्विस। See, in other universities, you'll see there'll be, or in hospitals, Hindu chaplain, Muslim chaplain, Jewish chaplain, Christian. Very rare Brahma Kumaris, because he's not really seen as one of the big faiths. So it's quite a thing that we're a chaplain there. Yeah, got it. तो माना चैपलिन माना जैसे कोई भी एक हॉस्पिटल होता है, यूनिवर्सिटी होता है, वहाँ पर हिंदू चैपलिन्स होते हैं, मुस्लिम चैपलिन्स होते हैं, अलग अलग धर्मों वाले जा करके अपने जैसे वॉलंटियर सर्विस करते हैं। तो ब्रह्म कुमारी जैसे चैपलिन वहाँ पर जाके सेवाएं करना, ये भी एक अलग बहुत विशेष बात है। तो इनकी मेहनत से वो भी इनको जैसे चांस मिला तो सेवा करने के लिए। When I first got this job, the head of the department asked me, what is your idea of success? Because I think he was concerned that I was going to try and create lots of BKs on campus. So my answer to him, my idea of success, because they think you're going to, create your religion. My idea, if one person takes benefit from some positive thinking or gets uplifted, that's good enough for us. We're not looking at numbers or creating our own religion there, no. So when did you leave your locking job? Or Oh yeah, I left my locking job when I came to Loughborough, actually. I was in social services then. I turned to social services and I left there when I came to Loughborough 11 years ago. जो लॉकबरो है वहाँ पर जब आए लॉकिंग जॉब इन्होंने छोड़ा, तो जब एक यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ की डिपार्टमेंट इंचार्ज ने इनको पूछा सफलता माना आपके लिए क्या है? तो आप यहाँ पर आते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं, अपना धर्म का प्रचार करते हैं। तो लेकिन सिस्टर ने कहा कि एक व्यक्ति भी अगर पॉजिटिविटी का ज्ञान लेता है, अपनी लाइफ में परिवर्तन करता है, वो हमारे लिए सफलता है। And now we've just had a breakthrough in that I was offering positive thinking and meditation regularly, but only small numbers would come. Now, since going on Zoom and going online, I've connected with the personnel department and we offer courses as part of their mainstream training. It means they're publicising positive thinking, they're promoting meditation as part of staff training. It's quite a thing, actually. I don't have to promote. I just have to turn up now. So because they've accepted us, and now we get 40 at a time for positive thinking. It's full. The course is full. So we're in the mainstream. It's for staff training. It's really, just to tell you, we have 17,000 students, 17,000 and 3,000 staff. So it's quite a step forward for Baba's work, actually. So like 17,000 students, out of 17,000, how many are involved now with the courses? How many? How many involved? How many are attending the courses and all? Few. It's the staff. Okay. I'm training staff on positive thinking and meditation. This is the first step in. Okay, yeah. I hold courses. I hold lunchtime courses. I hold sessions, but for students, we get small numbers come, but not big numbers. Yeah, okay. तो देख यूनिवर्सिटी जहाँ पर सेवाएं करते हैं वहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स चलता है, लेकिन शुरू में बहुत कम लोग आते थे, लेकिन जूम के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी में 17,000 स्टूडेंट्स और 3,000 जितने स्टाफ हैं। तो उनका जो पर्सनल डिपार्टमेंट के साथ इनका कनेक्शन हुआ, तो मेन स्ट्रीम ट्रेनिंग में उन्होंने इनके कोर्स को इन्वॉल्व कर दिया। अभी इनको अपने कोर्स के लिए वहाँ पर जाकर के प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही इनका जो कोर्स है अपने ही जैसे मेन स्ट्रीम में इन्वॉल्व कर दिया, तो सेवाएं करना सही हो गया। So I also help at Leicester. I go regularly to Leicester, though it's still lockdown here, but I will go to Leicester and I help there with giving courses, because Leicester is mainly Indians that go there, and so they're happy to see another white face in Leicester. लेस्टर जो बाबा का घर है, बहुत ही ब्यूटीफुल, वहाँ पर बाबा का घर बना हुआ है। सिस्टर वहाँ पर भी जाती रहती है, क्योंकि लेस्टर में
जितने भी सेवा करने वाले हैं भारत के हैं, तो कोई लोकल वहाँ के जाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, तो लेस्टर बरो सेवा करने के लिए सिस्टर बीच बीच में जाते रहते हैं। So I help at other centres. I help all the smaller centres in the middle of England is called Midlands. And the Midlands, we have other small centres. I help them online or visit them for English service, well as Leicester and Loughborough and the university. And that keeps me busy 7 days a week. मिडिल ऑफ इंग्लैंड का जो मिडिल पोर्शन है उसको मिडलैंड बोलते हैं, तो वहाँ पर जितने भी सेंटर्स है सारे सेंटर्स में सिस्टर जाती है, मदद करती है, लेकिन मेजॉरिटी लफबरो लेस्टर जो यूनिवर्सिटी है, हफ्ते में 7 दिन वहाँ पर बिजी रहते हैं सेवाओं में, लेकिन अलग अलग इंग्लिश सर्विस। देखिए इनका इंग्लिश कितना अच्छा है, कितना पावरफुली सिस्टर बोल रही है। तो इनकी जो इंग्लिश की विशेषता है, इंग्लिश में बोलने का, कोर्सेज कराने का, सेवाएं करने का, तो इंग्लिश सर्विस में सब जगह जाकर के मदद करते रहते हैं। So when I go to Leicester, again, many Indians there, but I seem just to fit in. I don't have a problem. The food is very chilly there, but I don't have a problem. I get on with everybody there, and all the mothers I get on well with. So maybe they say to me, Natalie, you must have been Indian in your previous birth. So maybe I was. I don't know. I find it easy. Yeah, I know the food in the Leicester Center is very tasty. All the mothers they cook ना। तो जब सिस्टर जब भी लेस्टर सेंटर पर जाती है, तो वहाँ पर भारत की माताएं उनके साथ मिलजुल जाती है। वहाँ का खाना थोड़ा सा तीखा होता है, तो भी सिस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए वहाँ की माताएं बोलती हैं कि शायद आपका जो लास्ट बर्थ है वो शायद आप भारतवासी थे, इसीलिए आपको अच्छा लगता है, भारत वालों के साथ आप इजीली घुल मिल जाते हैं, आपको दिक्कत नहीं होता है। My experience. Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. Thank you. You had everything in your life, good job, every kind of comfort. Even then, you were in search of peace and truth. And whenever you visited India first time, you felt, yes, I have reached my home. Because you are originally Indian, so it attracts you, of course. प्यारे साथियों, आप में से किसी को कुछ पूछना है, भाई और बहनों? Is there anybody who want to ask something? किसी को कुछ कहना है, पूछना है? Okay. Thank you, sister. You have a really good story, and we enjoy it, and we learned it from it. How much love you have in your heart for Baba. And very powerful. The way you speak, it has got so much power. Exactly. The command and all. Exactly. Thank you. Thank you. And गीता बहन, आज आपके भी साथ 1 घंटा बिताने का मौका बहुत दिनों के 1 hour went like 5 minutes, we didn't even notice. Thank you for translating. It's not easy, is it? And I'm not used to breaking and stopping. So thank you for that. You did great, Savita. Thank you. He is really a good translator, right? Really good translator. Yeah, almost. Since lockdown, we have been doing this. You had Alka yesterday, but you didn't need translation, did you? No. You didn't need it for Alka? No. Okay. चलिए कुछ देर बाबा की याद में बैठते हैं, कुछ पल. Okay, so let's meditate for 1 or 2 minutes and then we will finish. Okay, sister? My sweet home, my heart, my sweet home, I long for you. Golden waves glowing still there, resting stars in tinted